Alright, so this is our part 2 of our free webinar. In last session, what we saw was just a 1% of what we do. Okay, in there we saw how to identify a reversal, how to identify a change of character, and how to trade those change of character. I usually call that as module 1. Okay, in this second part we are going to look how to do multi time frame analysis. Okay, multi time frame analysis का मतलब जानते हो आप? What do I mean by multi-time frame analysis? Yes, it is still easy to understand without looking at part 1. Okay, here also we'll discuss the our previous sessions में जो हुआ था वो हम discuss करेंगे यहाँ पे. Okay, so the multi-time frame analysis is basically understanding the market flow, understanding the order of a market ki market bullish hai ya bearish hai. Okay, so how do we identify that? We look for higher time frame structures, and then once market comes back to our demand or supply zone, there we'll look for our entries. Last session में हमने सिर्फ देखा था कि how we should take our entries. In this session we'll see that how we can apply the higher time frame point of view and use it in lower time frames. Okay, cool then. All right, so here we are going to use multiple time frames. For higher time frames I'm going to use 4 hour time frame, and for lower time frame I'm going to use 15-minute time frame, 5-minute time frame and 1-minute time frame. As per your preference, आपको कौन सा time frame comfortable पड़ता है, you can definitely use that time frame. And please, मैं अगर कोई भी एनोटेशन वगैरह कर रहा है ना, आई विल रिमूव देम फ्रॉम हियर. ओके, प्लीज़ डोंट break the link. All right, so yeah, we are going to use 15-minute, 5-minute and 1-minute time frame for our entry modules, and 4-hour time frame. Also you can use daily time frame, weekly time frame if you are not able to find the structure on 4-hour time frame. Okay, so on 4-hour time frame, look for the order flow, mark each and every single order block near to that price action. And then the third one, the third strategy which you are going to talk about is how to use Fibonacci retracement if you are not able to find, let's say, demand zone or supply zone, or also you can call it as here order blocks. Okay, now here you can see that I have marked how the price action moves. Okay, if you see this just single one straight up line and also multiple breakout structure, you are going to mark each and every order block which is present in that price action. So how to identify a proper order block? So to identify a proper order block, you need consecutive red candle and then also a green candle. Why? First of all, you need to understand the price action. Just let me show you in the chart itself. So here you can see the screen. Yes, so whenever we identify a market structure, we look for higher highs and higher lows in uptrend, and then in downtrend we look for lower highs and lower lows. Whenever there is a high and low present, okay, so when price goes down there are red candles, yes or no? When price goes down there are red candles, correct? And when price goes up there are what? Green candles. Okay, so here we have to look for this consecutive red candle and consecutive green candle, and once price break above this zone, consider this as my green candle. Okay, when price breaks about this zone, this red candles are what are our order blocks. Okay, now here which one to choose? So first of all, whenever you are identifying an order block, you need to look for an opposite candle. If you are looking for a bullish order block, you have to look for a red candle, and if you are looking for a bearish order block, you have to look for a green candle. Okay, so here in this case we have red candles. I'm going to mark this zone as my order block, and we'll wait for price to come back to that order block and then look for our buy and sell trades. Okay, so this is that one scenario, that first of all identify the market structure, identify your order block on 4-hour time frame. Okay, this is the higher time frame point of view. Once you have identified the perspective of a market, are we bullish or are we bearish, then you will shift to lower time frames. Okay, just a second. Okay, I think so my mouse is busted.
So you will shift to lower time frame, wait for price to come for a pullback, and then let's say this is our 15-minute time frame. Okay, on 15-minute time frame you will look for a change of character, a retest, and then enter that trade. All right, is it clear how you are going to identify the market structure? Yes, no? Yes. So here again on the PPT I have explained you have to look for consecutive red candles, and then price should break above with that same intensity. Okay, as in consecutive green candle should break above this high. That's why we have a break of structure. All right, now let's look at some examples. Now here, first of all, let's identify the order flow of Bank Nifty. First of all, on your left, what you can see, price is making lower highs and lower lows. So people who are telling me how to identify a proper market structure, look for a reversal, a strong reversal, जैसे कि ये यहाँ से जब भी प्राइस एक यू टर्न मारता है, दैट इज़ अवर मार्केट स्ट्रक्चर. ओके, एंड जब भी प्राइस ऐसे रिवर्स यू टर्न मारता है, विच इज़ रिवर्सल ऑफ इट्स प्रो ट्रेंड एज इन जो ओरिजिनल ट्रेंड है, एंड देन प्राइस गोइंग अगेंस्ट दैट प्रो ट्रेंड, दिस इज नथिंग बट जस्ट अ पुल बैक. Okay, now here you have to identify what you have to identify each and every order blocks. So as I told you how to identify an order block, we need a consecutive green candle, and then there should be a breakout of that green candles. Okay, here we have a breakout of this low, and then this 1 2 3 4 candles are my order blocks. Okay, now here on daily time frame, as in on your higher time frame, you are going to use the extreme order blocks. Which, what do I mean by that? You are going to use the last candles as your extreme order block. In this case, no doubt we don't have a retest towards our order block. Now we are going to use the Fibonacci retracement for that. For look for the high, एक हाई पकड़ो जहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लिया है, एंड देन द लो फ्रॉम वेयर द प्राइस इज कमिंग फॉर अ रीटेस्ट. आई विल डबल क्लिक ऑन इट and just copy this levels. Okay, these are my golden ratios. Okay, these are my golden ratios. Take a screenshot, and on 0.706, 0.618, 0.7079 are my golden ratios. यहाँ पे जब भी market आएगा, I will look for my short trades. Now let's see what happens when price came back to this level. We'll go on to lower time frame. Now why I'm using multiple time frames like 15-minute, 5-minute and 1-minute time frame, because if I don't see any structure on 15-minute time frame, let's say, okay, so I will go to 5-minute time frame, and same for 3-minute time frame and 1-minute time frame. If I don't see any structure appearing on those time frames, I will shift to lower time frame. Same with higher time frame. If you are not able to find any structure on lower time frame like 4-hour time frame, go to daily time frame, weekly time frame, monthly time frame, and so on. Okay, here when the market came inside our zone, what you are going to look for our reversals, what you are going to look for a ट्रेड एंट्री जो हमने लास्ट सेशन में देखा था. व्हाट यू आर गोइंग टू लुक फॉर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्राइस एक्शन. ओके, ये लोअर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ऑन लोअर टाइम फ्रेम. मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लॉस. ओके, दैट डजेंट मैटर, बट हमें क्या चाहिए, हमें एक स्ट्रक्चर फेलियर चाहिए. दिस इज अ बुलिश चेन. ओके, वी नीड अ ब्रेक ऑफ दैट चेन, एंड कभी हमको मिला वो ब्रेक इज राइट हियर. You have a fake breakout structure. Okay, this is how you identify a fake breakout or a valid breakout. You can see here, no doubt हमारे पास gap up हुआ है यहाँ पे, but is that gap up a strong gap up? The next candle that appears, okay, the next candle that form, वो candle ने ये candle का high break किया. Yes, no doubt we also broke that high, but close हुआ कि नहीं. अगर मार्केट प्राइस ये कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग देता, फिर अगेन
और एक कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग देता तो आई वुड हैव कॉल दिस एज अ वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बट इन दिस केस दोनों भी सिनारियोज नहीं हुए एंड देन द सेकेंड कैंडल विच ओपनड हाई तो ब्रेक किया बट उसके नीचे कंटिन्यूस क्लोजिंग दी उसने. ओके, नाउ हियर वी कैन से दैट at least market has just sweep liquidity from that high and then also broke our what demand zone. Why I'm calling this as a demand zone? क्यों ये demand zone है मेरे लिए? Tell me. क्यों है वो डिमांड जोन मेरे लिए? बिकॉज फ्रॉम दैट लो वी हैव अ गैप अप. ओके, बिकॉज ये जो मूव हुआ स्टार्ट वो हुआ ये कैंडल से स्टार्ट, तो ये जो होगा मेरा वो होगा मेरा ऑर्डर ब्लॉक. ओके, ये है लास्ट कैंडल, लास्ट डाउन कैंडल and then we have an up move. Price took out that low as well as now look at this. How to confirm that that change of character is a valid change of character? First of all, what you can see here, ये valid change of character लग रहा है आपको? Yes, no? Do you think this is a valid change of character? No, right? Why? Because there is no close below that low. Okay, we need a proper close below that low. जब भी आपको विक दिखाई दे भाग जाओ वहाँ से. As in, don't try to chase the market until and unless वो order flow क्या नहीं होता, continue नहीं होता. Then what we have consecutive green candle and then this strong displacement. You can see that how we broke that structure. First एक candle ने break किया, then second candle close below that candles low. Okay, यहाँ पे now you can use again your Fibonacci tool. Now for me the order block is on 15-minute time frame. You're not going to use the last green candle. Okay, last candle, we are going to use the series of this candles. Okay, so for me this is that series of green candle. This is our order block. ये order block हुआ हमारा, sorry not FVG, the order block. Price came back to your order block. Take your entry here. Your stop loss will be just above that high. थोड़ा buffer रखना because if price let's say came above that high and then उसके बाद नीचे आता है तो थोड़ा सा buffer रखो and then the price continues from there. तो target क्या रखना है, क्या I always prefer 1 to 2 or any market structure or any liquidity which is below that zone, that is my target, and simply follow the market structure until and unless there is no change of character. Okay, understood? Now here also you can use the same trick which we use on higher time frame by using the Fibonacci tool. Now we have a breakout structure, yes or no? We have a valid breakout structure. So here what we will do is we'll pick up this high, we'll pick up this low and let market goes inside this level. Okay, 50% के अंदर जब भी मार्केट घुसेगा दैट वी कॉल इट एज आवर वैलिड एंट्री. वो पेरिस साइड पे भी हो सकता है, वो बाय बुलिश साइड पे भी हो सकता है. ओके, नाउ हियर मोस्टली आई प्रेफर 50% के ऊपर एंट्री इंस्टेड ऑफ गोइंग विद 61, 706 और 79, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि मार्केट एक बार जस्ट 50% के अंदर भी आ गया ना तो जस्ट वो टैप करेगा एंड देन रिवर्स करेगा. सो बेटर है कि आप अपने ये 50% को एज अ प्रायोरिटी रखो रादर देन यूजिंग दी अदर लेवल्स. यस, सी एज द नेचर ऑफ अ मार्केट इज फ्रैक्टल. जो हायर टाइम फ्रेम पे होगा वो सेम चीज़ लोअर टाइम फ्रेम पे होगा. तो इंस्टेड ऑफ लाइक यूज लुकिंग एट दिस ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको काफ़ी जल्दी एंट्रीज भी मिल सकती है. ओके, सो इट बेटर है कि अगर आप फिर भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो. ओके, सो हियर इज़ अ डिस्क्लेमर, 1 मिनट टाइम फ्रेम इज़ वे टू नॉइजियर दैन दी other two time frames which I am talking about. 1 minute time frame पे you will definitely get an early entry as compared to 15 minute and 5 minute time frame, but उसमें क्या होगा कि आप मे बी एज अ लिक्विडिटी भी बन सकते हो बिकॉज यहाँ पे वो क्राइटेरिया आता है कि देर विल बी मल्टीपल चेंज ऑफ कैरेक्टर और फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, सो इट्स बेटर टू हैव अ लेस नॉइजियर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड फिर उसके बाद जब भी प्राइस वहाँ पे वो लेवल्स पे आएगा तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो. जस्ट इन केस यहाँ पे और एक एग्जांपल है, प्राइस टुक आउट दिस लो ऑल्सो. यहाँ पे वी हैव अ चेंज ऑफ कैरेक्टर. ओके, वो दिन प्राइस ने वो टेस्ट नहीं किया, बट व्हाट डू यू सी ऑन द नेक्स्ट डे ऑन February 1st, प्राइस केम हियर
I'm using this consecutive red candles as my order block. Price came inside that order block, and then we have this beautiful up up move. Okay, again, if you don't want to trade directly from that order block, you can always look for a confirmation as in look for a change of character. Now, to identify a change of character just by using candles, how you can do it? So first, here is a green candle. ओके, एज इन ये जो इधर का जो प्राइस एक्शन रहेगा उसका मूव क्या रहेगा, एक अप मूव है, यस और नो. फिर प्राइस गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम देयर, देन वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, देन वी हैव दिस लो, देन दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स हाई. करेक्ट, ये मेरा क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया, यस और नो. This becomes my supply zone, correct? This green candle become my supply zone, yes. So either if you have taken a long trade from here, you can book your profits at this supply zone, or if you see any change of character or market trying to break above this high, this is a breakout, this is a change of character I have, and then you can look for your order block. This is the last red candle, as you can see. Why I'm choosing the body, not the entire candle? Can you guys tell me why I'm choosing the body, not the entire candle? Because sometimes price क्या करता है कि it will create inducement और it will create liquidity, it will create a fake move. Let's say आपने ये move लिया, आपका stop loss just उसके नीचे था, you get hit and then the original move starts. So whenever you are marking your order block, either it is a bullish order block or either it is a bearish order block, always look for the candle, सॉरी द बॉडी ऑफ द कैंडल एंड द विक ऑफ दैट कैंडल. ओके, जैसे कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में इसका ये बॉडी रहेगा और इसका ये हाई विक वो एंटायर कैंडल रहेगा. यहाँ पे भी दिस बॉडी ऑफ दैट कैंडल एंड द विक ऑफ दैट कैंडल. व्हेन द प्राइस कम्स बैक टू दैट जोन, तो यहाँ पे क्या हो गया, यू हैड मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस, यू हैव मल्टीपल कन्फर्मेशन, आप काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो. इन दिस केस मैंने ये यूज़ क्यों किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फिबोनाची का लेते हैं, लेट्स सी डू वी हैव दैट inside the 50% mark or not. We have that inside our 50% mark, yes, we have that inside our 50% mark. So जैसे कि मैंने बताया, I mostly prefer taking trade at 0.5% because that is our premium and discount. If you don't know about it, it's okay, but हाँ 50% पे आके आप यहाँ से भी you can go to lower time frame and also look for double confirmation if you want to. All right, now again अभी यहाँ पे you can't see any clear breakout structure, yes or no. If you take an entry here, our exit point will be the next supply zone or 1.2, right? Yeah, you can either keep the next supply zone as your target or you can keep 1:2 as your entry. Yes, ये this is the strategy based on optimal trade entry. यहाँ पे optimal trade entry के basis पे आप trade ले सकते हो. आपको basically order blocks या फिर demand supply zone mark करने की भी ज़रूरत नहीं है. You can directly use the Fibonacci tool and when price comes back to the zone, आप directly वहाँ से trade ले सकते हो. In this case we have a breakout structure, you can see here you have a proper breakout structure, but यहाँ पे there is also an order block. ये last red candle दिख रहा है आपको, there is also an order block. So without even looking for an order block, you can just simply look for a breakout structure or change of character and look how that zone is valid. Okay, but also the most important factor is कि आपको higher time frame का perspective नहीं भूलना है कि आप 15 मिनट्स एंड 5 मिनट ये लोअर टाइम फ्रेम पे स्टक हो गए और यहाँ से आप सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे बाय 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 करते जा रहे हो. या फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे देखो, वी हैव अ स्ट्रॉन्गर डिस्प्लेसमेंट, यस और नो. ये दिस इज़ अ वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यस है ना. इज दिस अ वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर? कैन आई कंसिडर दिस एज अ वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यस और नो, राइट. सो यहाँ से भी मैं अगर फिबोनाची मार्क करता हूँ, ओके, प्राइस केम बैक टू अवर जोन, बट इफ़ यू लुक एट योर लेफ्ट, व्हाट वी हैव, प्राइस क्या चल रहा है अभी, बुलिश ट्रेंड में है कि बेरिश ट्रेंड में? ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, आर वी स्टिल इन द बेरिश ट्रेंड और आर वी इन द बुलिश ट्रेंड? ओके, सो वी आर इन द
bearish trend. Now, right now, few of you guys must know, don't know what is liquidity or such that, but एक एग्जाम्पल देता हूँ. यहाँ पे आपको दिख सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ माई ऑर्डर ब्लॉक. ओके, ये है वो ऑर्डर ब्लॉक. बट इसके नीचे अभी यहाँ पे कैसे इंस्टीट्यूशन या फिर एल्गोरिदम द नॉर्मल रिटेलर्स को ट्रैप करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे देखोगे कि प्राइस कितने टाइम से वो एरिया पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन अ नॉर्मल ट्रेडर या फिर न्यू भी होता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो ट्रेड लेता है, वो क्या कंसिडर करता है कि ये एरिया क्या हो चुका है, अभी वीक हो चुका है. क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक अबाउट दैट जोन. करेक्ट. बट क्या होता है, मार्केट हैव डिफरेंट थिंग्स फॉर यू. इट क्रिएटेड अ एंटायर zone or entire liquidity for institutions to trap. यहाँ पे उसके ऊपर क्या है, whenever a person is taking a short trade, वो अपने stop loss high के ऊपर लगाएंगे. yes or no? Whenever someone is taking a short trade, they are going to place their stop loss above this high. Correct. And once market is above that high, there are two things that going to happen. Either the price will continue to go up, or it will just sweep that liquidity, and then it will completely reverse from there. Okay, so whenever you are in this kind of situation, okay, whenever you are in this kind of situation, always look for a continuation pattern. Even though there is a continuation right here, look for, is that price able to withstand, or is that price able to sustain that level or not, or it is making higher highs and higher lows. If it is making higher highs and higher lows, that is a clue that you are going to buy. Okay, but it is not making higher highs and higher lows. अगर आपने मेरे वो वीडियोस देखे रहेंगे based on market structure, तो we have talked about strong, weak, high and low. Okay, if this low is not able to make a new high after coming back to its demand zone, if the price is not able to make a new high, that is a clue that price may reverse from there. And then that exactly that thing happened. Price reversed from that low, and then again, if I went to higher time frame, let's say 1 hour, 4 hour time frame, we have also broke this low right here. That also count as what? Change of character. And if I zoom in, here, to identify an order block, what do I need? Consecutive green candle, and then a strong displacement. I have consecutive green candle and a strong displacement. This is my what? This is my bearish order block. Wait for market to give you a pullback near to your zone, and then short. Go with 1:2, or you can also book your profits based on market structure. Okay, you can use any time frame for your higher time frame analysis. Let's say you are a day trader. Okay, and दो चीज़ें आप कर सकते हो. This is how I also do. Weekends के time पे go with daily, weekly, monthly time frame. ट्राई टू आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर. एक बार करते हैं इस पर, आपको क्या चाहिए, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या फिर फिन निफ्टी, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं फॉर टुमारो. सो आई विल ऑल्सो गिव यू माई परस्पेक्टिव कि वॉट डू आई सी इन दी ऑन द चार्ट. चलो बैंक निफ्टी पे ही करते हैं फिर. सो राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन बैंक निफ्टी, पहले ड्राइंग्स क्लियर करते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, are we in an uptrend or are we in a downtrend? What do you guys think? अभी के लिए are we in an uptrend or are we in a downtrend? So overall, अगर मैं zoom out करूँ, price is still going up. Okay, अभी तक uptrend में ही है, but still अपन वो छोटे छोटे ये भी ये कर सकते हैं, change of character identify करके trade कर सकते हैं. Yes, you can definitely use no gap candle. You can also use Heikin-Ashi tool. ओके, Heikin-Ashi कैंडलस्टिक पैटर्न. इसमें आपको क्लियर वो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल दिख सकते हैं, बट ये मैं प्रेफर करूँगा हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करो. लोअर टाइम फ्रेम पे सेम वही नॉइज़ आपको मिलेगा. ये जस्ट टू एलिमिनेट द गैप्स. एंड इफ़ यू आर नॉट comfortable using the Heikin-Ashi tool, you can use the no gap candle indicator. Okay, indicators पे आप टाइप कर सकते हो no gap candles. ये है इंडिकेटर वो. इफ़ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस
एंड वंस यू अप्लाई दिस इंडिकेटर, जितने भी गैप्स है ना वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। यहाँ पे यू कैन सी मैं नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करता हूँ। सो ये जितने भी गैप्स है मार्केट क्या करेगा, फिल कर देगा उसमें। द प्रॉब्लम यूजिंग दिस इंडिकेटर इज, पहले तो क्या होता था कि आई कैन हाइड दी ओरिजिनल जो भी कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, बट अभी रिसेंट अपडेट के बाद वो ऑप्शन यहाँ से गया। बट अभी क्या हो गया कि ये जो इंडिकेटर है इट्स ओवरलेड ऑन द एक्चुअल चार्ट। सो यहाँ पे आपको रेड कैंडल ग्रीन कैंडल आइडेंटिफाई करने में थोड़ा इशू आ सकता है, बट स्टिल इट इज़ रिकमेंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉपर जोन्स, आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक नाउ। हियर वी आर मेकिंग वॉट, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher high. Okay, and then at this point price broke below this demand zone. ये था मेरा लास्ट ग्रीन कैंडल, ये था मेरा लास्ट, सॉरी, रेड कैंडल। दिस वॉज माई वॉट, बेरिश और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये मेरा बुलिश है या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इज दिस माई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक? एंड मैंने ये जो पीपीटी में लिखा था कि ईच ऑर्डर ब्लॉक इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन पॉइंट। ओके, सो आप देख सकते हो व्हेन प्राइस केम बैक टू दिस जोन, ये कैंडल को अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो कैसे हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला। तो यूजिंग दैट ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई नाउ यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस केम below and then we have a strong displacement, strong breakout structure towards the downside. So when we are going to buy such kind of trades, when there is a चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट, वी ऑल्सो हैव अ लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है कि इवन दो यू नो अबाउट दिस थिंग्स, लिक्विडिटी स्वीप ही मैटर नहीं करता। हम अभी मार्केट के कौन से ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव है कि बायर ज़्यादा एक्टिव है, एज इन सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में या फिर डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। राइट नाउ हम जहाँ पे थे, प्राइस वॉज इनसाइड अ प्रीमियम जोन यू कैन कॉल इट, या फिर जहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ओके, सो यहाँ पे इफ़ आई अवॉइड दोज थिंग्स, वी हैव अ स्ट्रॉन्गर डिस्प्लेसमेंट, वी स्टिल हैव दिस सप्लाई जोन जहाँ से मार्केट ने अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं दिया टुवर्ड्स द अपसाइड। सो आई विल स्टिल क्या करूँगा, मैं शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूँ या फिर आई विल वेट फॉर अ प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर टुवर्ड्स द अपसाइड टू गो लॉन्ग। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक भी हमें वैसे प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला। बट इफ़ यू कैन सी हियर वी हैव this change of character, that is still not a valid change of character. Why? Because जो extreme one है वो अभी तक क्या हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी आगे जाके। नाउ अगेन प्राइस इज स्टिल फॉलोइंग इट्स bearish market scenario. So now what we have here is higher time frame ka change of character. So whenever there is a higher time frame change of character or breakout structure, price tends to follow that until and unless again कोई higher time frame पे we don't see any major reversal. So आपको क्या करना है, just follow the price action or just follow the order flow. Okay, now again let's go back to daily time frame. So on daily time frame हम कहाँ पे है, on daily time frame we are inside this bullish order block. Okay, ये green candle है. So until and unless market won't see a break below this low या फिर ऐसे continuation, ऐसी break मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस ऐसा स्विप कर दे एंड देन वी हैव अ wick below that low. We need a proper candle, a strong engulfing candle, a red candle to break below that low, just like this one. Then I can consider that as a change of character. But until and unless if we are still sustaining above this ऑर्डर ब्लॉक, वी कैन स्टिल लुक फॉर बाय ट्रेड्स। अभी आप देख सकते हो कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग ये आया था, सेल ऑफ आया था, प्राइस स्टिल रिकवर्ड फ्रॉम देयर। यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, प्राइस स्टिल रिकवर्ड फ्रॉम देयर। सो ये चीज़ें हमें कंसिडर करनी है कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क करते हो हायर टाइम फ्रेम पे, दोज ऑर्डर ब्लॉक्स और दोज डिमांड एंड सप्लाई जोन्स आर गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड इवेंचुअली। ओके, और फिर आप
यूजिंग द प्रो ट्रेंड जो हायर टाइम फ्रेम पे चल रहा है, विच इज मार्केट इज मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, यूजिंग दैट information you can take your entries on smaller time frames. So now here what we have last green candle, then this up move, and then price breaks below that green candle. Okay, I am using that as my order block. Ye hua green candle as my bearish order block. I will wait for price to come inside that order block. Now 15 minutes pe we have a displacement यहाँ पे दिख रहा है, but I can also go on to 5 minute time frame to take the actual trade. So यहाँ पे क्या है, we have a higher high, higher low, price breaks below that low. This is the order block which created that, and when price comes back to that level I can look for my short trades. But eventually अभी क्या कर रहा है market? What do you guys think? Even if I am considering this consecutive red candles, what the price is actually doing, like fake move there है नीचे के side पे. Correct, Vijay. We are creating liquidity above that zone. Okay, so understanding liquidity is much more important than just looking at the order blocks, demand, supply, and whatever you can call it. Yes, you can take entries. अभी जैसे यहाँ पे देखो, अभी इफ़ आई एम लुकिंग एट करंट मार्केट, ऐसे ये देख रहा हूँ मैं, ठीक है. सो इन दिस केस वी स्टिल हैव अ स्ट्रॉन्गर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट. एंड ये जो है, ये ग्रीन कैंडल इज माई ऑर्डर ब्लॉक in that particular day, and price actually reacted from that order block. Okay, and price is reacting from that order block multiple times. So जैसे कि एक कोई particular level से market अगर multiple times reject होता है या फिर multiple times उसको test करता है, that means people are taking positions over there. Okay, and see, institutions are not behind the retailers. करेक्ट, इंस्टीट्यूशंस को कुछ ऐसा ये नहीं है, ग्रजेस नहीं है रिटेलर्स के लिए कि हाँ हम हमें उनके स्टॉप लॉसेस उठाने के करके. दे आर जस्ट बिहाइंड दी अदर रिटेल सॉरी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स. सो ये जो बड़े बड़े मूव्स आपको दिखते हैं ना, ये बेसिकली आर क्रिएटेड बाय द यूज मनी, आर क्रिएटेड बाय द बैंक्स, नॉट बाय द रिटेल ट्रेडर्स. ये जो छोटे छोटे आपको कैंडल्स दिखते हैं ना, ये दिस आर द मूव्स बाय द रिटेल ट्रेडर्स. ये जो बिग ह्यूज मूव्स दिखते हैं ना, गैप अप, गैप डाउन, दिस ह्यूज बॉडी ऑफ अ कैंडल, दिस आर क्रिएटेड बाय द इंस्टीट्यूशंस. नाउ हियर वी definitely have a consolidation, as in price is trying to create liquidity both upside and also downside. Okay, so here are the things which you need to consider, that either price will cap up, tapped into that liquidity, also your order block, and then go like this, or gap down होके change of character देख के आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हो. वाई लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हो? बिकॉज वी आर स्टिल इनसाइड दिस डेली ऑर्डर ब्लॉक. नाउ if price, let's say, goes below that daily order block, now we have multiple red candles over here which is too messy to identify. So we can go to weekly time frame, and weekly time frame pe you have to look for the next order block. So on weekly time frame you can basically see that we are inside that weekly order block also, which is also a strong sign that price may bounce from there. And also we have this next weekly candle which price has already tested. As you can see that एक strong breakout आया, price broke above that red candle, and then also came back to a retest. ये मोस्टली जब ये प्राइस न्यू हाई को टच करने को चाह रहा था, दैट्स वाई वी हैव दैट कंसोलिडेशन, एंड देन मार्केट जस्ट शूट अप फ्रॉम देयर. सो वीकली टाइम फ्रेम, जैसे जैसे आप हायर टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे, वैसे वैसे जो जोन्स आप मार्क करते हो, दे बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ओके, सो दिस zone has already been mitigated multiple times. So what can you see here again? यहाँ पे मैंने भलते भलते में लिक्विडिटी भी आपको सिखा दिया, so take it as a bonus. So यहाँ पे we have consolidated a decent amount of time. So what we have here in this low, liquidity, correct. So अगर कल gap down देता है, और if we go below that, this will be a good area for us to watch, and then price में go above from here. Okay, and weekly time frame पे we are definitely not into a discounted zone, so we have to consider that. So यहाँ पे आप बोलोगे तो ये conclusion क्या निकला है इसमें? conclusion basically ये है कि we have to know where we are at current market scenario, and whenever we are inside a
particular higher time frame ke zones, we have to go back to our lower time frame and then look for our entries. So if we are bullish on a higher time frame, look for buy trades whenever price comes back to those zones. Yes, we'll take our entry only when there is a change of character on lower time frame. If you don't have any change of character on lower time frame, we are not going to take those entries. और जैसे कि मैंने बताया कि अगर strong displacement नहीं है, don't look for that. And if we have a stronger displacement of change of character, also look for a follow up breakout structure whenever you see a चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्मिंग. एक विक भी होगा तो भी चलेगा, बट अगर वो विक होने के बाद भी प्राइस अगर ऊपर नहीं जाता एंड डजेंट मेक अ न्यू हायर हाई, यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट एंट्री ओवर देयर. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, बट once you start looking at charts, once you start train your eyes and also control your emotions, you can definitely spot those patterns over the period of time. Yes, you need a change of character as well as a continuation structure. Now again, if I'm looking here and गो लेट्स से मैंने वीकली देख रहा था, ठीक है ना, वीकली टाइम फ्रेम का उसका लोअर टाइम फ्रेम होगा 4 आवर टाइम फ्रेम. सो इवन इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड एज इन शॉर्ट टर्म ट्रेंड की वीक, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो आपको 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट पे जाने की ज़रूरत नहीं है. आप हायर टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई करके ही ये कर सकते हो. अभी ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम व्हाट वी हैव, 4 आवर टाइम फ्रेम पे we have a low, we have a high, then again a lower low. So price अगर इसके ऊपर जाता है, so we can have a shift in structure on a 4 hour time frame as well as lower time frame. जैसे कि price fractal है, so जो higher time frame पे हो रहा है वो as well as lower time frame पे भी होगा. So you can buy for a shorter period of time and you can target this order blocks which is forming on this टाइम फ्रेम्स. यू कैन, यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, सी दिस ग्रीन कैंडल, द प्राइस ब्रोक बिलो दैट ग्रीन कैंडल, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल जहाँ से प्राइस रिवर्स होके नीचे आया. ओके, क्लियर? ऑलराइट, एनी डाउट्स अदर्स? Alright then, before signing off, I just want to let you guys know is, just a second. एक बार recording देख लेना, so it will be definitely clear for you guys. I will post the recording of both this session by tonight. Okay, so before clearing your doubts, I just want to let you guys know is that we are starting our September batch. Okay, so for September batch I will provide you with live teaching and this will be the last session जहाँ पे मैं group live batch लेने वाला हूँ. So yeah, make sure if you want to learn more about this concept you can definitely join this course. Okay, ये 4th September से चालू होगा and I will provide you with study materials, video lectures. Okay, video lectures will be जो भी हम live सीखेंगे उसका video lectures आपको recorded form में मिल जाएगा and you will also get a lifetime access to our Discord community जहाँ पे मैं अपने trade ideas and analysis post करता हूँ. And one more thing, I will give you a 1 week free live trading once you have learned each and everything. आपको live trading मिलेगा. Okay, जहाँ पे you will learn how to apply all the strategies which we have learned and how to apply them in live markets. Okay, and then वीकली एनालिसिस सेशन होता है हमारा एज इन सैटरडेज एंड संडेज. इफ़ यू नीड डाउट सेशन जो भी होगा वो आपको उस पर मिलते जाएगा. ओके, डिस्कॉर्ड पे आपको लिंक मिलेगी वहाँ पे. एंड फॉर दैट, फॉर यू गाइज विच यू आर प्रेजेंट हियर, इफ़ यू क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड टाइप TBT September batch, you will get a 33% off. Okay, this is only for first 10 members who joined till 12 AM. Okay, ये आज तक ही वैलिड है, उसके बाद द प्राइस विल
come back to 9999. Okay, so if you have any doubts, anything regard to that, I will give you my assistant's number, and yeah, then you can contact them. And if you are interested to join, ये आपको link through telegram मिल जाएगा. If you have any doubts regarding to a course, आप पूछ सकते हो मुझे. And yeah, आई मीन ऑब्वियसली यू कैन डेफिनेटली, अगर आपको आता है सब कुछ, एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन द कम्युनिटी, आपको कोर्स के साथ साथ कम्युनिटी का एक्सेस भी मिल जाएगा. एंड दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम. यहाँ आगे जाके आपको कुछ पे करना नहीं है, कुछ नहीं करना है. एंड आई प्रॉमिस दैट दिस विल बी दी वन एंड ओनली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोर्स यू नीड फॉर यू एंड ऑल्सो द कम्युनिटी. टाइमिंग होगा फॉर ऑफिस प्रोफेशंस. इसके लिए मैंने टाइमिंग रखा है 7 to 8. इफ़ देर इज़ समवन हु इज़ नॉट एबल टू अटेंड द सेशन, आपको वो दिन का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा. टॉपिक्स, हर एक टॉपिक्स के ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन रहेगा. जैसे कि हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा, ऑडियो ब्लॉग देखा, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन रहेगा विथ पीपीटी, जिसपे हर एक डिटेल्स में आपको बताया गया है कि कहाँ पे ऑडियो ब्लॉग क्यों फॉर्म होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द फॉर्मिंग द ऑडियो ब्लॉग. एंड ये तो कुछ नहीं था, दिस इज़ जस्ट लाइक 10-20% ऑफ व्हाट वी ट्रेड इन द मार्केट. आपका तो जो मेन जो आता है, इट इज़ मोस्टली द मार्केट मेकर्स मॉडल, विच इज़ आइडेंटिफाइंग द प्राइस अभी फ़िलहाल के लिए अप ट्रेंड में क्यों है, प्राइस डाउन ट्रेंड में क्यों है, प्राइस अभी ये पॉइंट से रिवर्स कर सकता है कि नहीं, ये भी आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करने को मिलेगी. एंड ऑल्सो द लिक्विडिटी पार्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जस्ट आइडेंटिफाइंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ऑल द स्टफ. एनीथिंग एल्स? All right, then we'll sign off and see you guys, those people who are going to join us on 4th of September. See you guys there. Take care, bye bye, and see ya. Happy trading.